then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, cloud, folder, app, application, operating system, internet, web server, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, bug, debug, code, program, command, sequence, loop, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, cloud, file, folder, app, operating system, unplaying, website, operating system, internet, web server, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, bug, debug, code, program, sequence, loop, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, bina, storage, cloud, folder, app, application, operating system, internet, web browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, bug, program, cut, program, command, sequence, looper, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, file, folder, app, application, operating system, internet, website, operating system, internet, website, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, debug, code, program, command, sequence, loop, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, cloud, folder, app, application, operating system, internet, web server, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, bug, debug, code,
100% operating system, internet, web server, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link, algorithm, bug, debug, code, program, sequence, loop, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, bina, storage, cloud, folder, application, operating system, internet, Wexer, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, bud, program, cut, program, command, sequence, looper, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, file, folder, application, operating system, internet, Wopser, operating system, internet, Wopser, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, debug, code, program, command, sequence, loop, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, cloud, folder, application, operating system, internet, Webster, browser, cyber safety, hardware, software, icon, drag and drop, click, double click, scroll, link. Algorithm, bug, debug, code, program, command, sequence, loop, variable, condition, if then statement, input, output, function, event, block-based coding, text-based coding, pixel, data, storage, cloud, file, folder, operating system, unplaying. तो जो मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूंगा वो अपने एंड्रॉइड में करूंगा, ठीक है। तो उसका प्रोसेस बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो ये दिख रहा है, जो लैच वो नाम का एक लैच व्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और लैच व्यू नाम का एक एप्लीकेशन भी है, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप सर्च करोगे, स्कैन करोगे, ठीक है, स्कैन हो जाएगा। जो आपको स्कैन करना है, ऊपर एक स्कैन बार होगा, उसको स्कैन करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बिल्ड,
ठीक है। बिल्ड नंबर को 7 बार टैप करना है और जो आपका डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। अब जाते हैं डेवलपर ऑप्शन पे। डेवलपर ऑप्शन, और इधर देखिए यूएसबी डबिंग का ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक है। ये वाला यूएसबी डबिंग का जो ऑप्शन है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद एक और ऑप्शन आता है इधर, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग। ठीक है। इसको टैप कीजिए और फाइल ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद बैक बैक, उसके बाद ये। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ऑफ, या फिर ऐसे ही रहने देता हूँ। और जो आपकी डाटा केबल होगी, डाटा केबल को कनेक्ट कनेक्ट कर लीजिएगा, या फिर ऐसा कीजिए कि इसके अंदर आइए। ठीक है। इधर जाइए और प्लगइन्स के अंदर जाना है आपको। प्लगइन्स किधर है, इधर। और यहाँ पे सर्च कीजिए एडीबी। ठीक है। एडीबी वाईफाई, इसको इंस्टॉल कीजिए। अप्लाई। ठीक है। अप्लाई के बाद ओके। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जो ये एडीबी वाईफाई है ये ऑन हो जाएगा, और अपने जो आपका जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप से। तो मैंने क्या किया है, अपने डिवाइस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है और यूएसबी को यहाँ पे लगाता हूँ अपनी विंडो, और कनेक्ट करता हूँ अपने डिवाइस से। ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, चेक कीजिए और एलो। ठीक है। बैक। ठीक है। इसको करता हूँ इधर, और इसको देखिए वाईफाई और आपका जो आईपी एड्रेस है उससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे करता हूँ इससे कनेक्ट, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो आपकी यूएसबी लगी हुई है, अब आपकी जो यूएसबी लगी हुई है आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है। मैं यूएसबी निकाल दी है। जो आपका मोबाइल डिवाइस कनेक्ट है वो कनेक्ट है। ठीक है। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, और जो मेरा एंड्रॉयड है उसको रन करता हूँ। ठीक है। जो मेरा एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रहा है, देखिए लॉन्चिंग। ये कह रहा है कि भाई आपके मोबाइल में सैम पैकेज है। देखिए जो एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।